So, good evening, all of you. I am Dr. Ankit Mehta from Zydus Hospital. Welcome to this Facebook Live session on childhood poisoning. So, what we are going to talk about today is I have taken this topic which is very relevant to a emergency doctor and a intensivist. Fine. So, ये मैंने इसलिए आज चूज किया है क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन थिंग है इमरजेंसी के डॉक्टर्स के लिए और आईसीयू के डॉक्टर्स के लिए, और इस प्रकार की चीज बहुत ही रूटीनली तो नहीं आती है, लेकिन जब आती है तो एक बच्चे के लिए वो बहुत जानलेवा हो सकती है। और हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, किस चीजों के ऊपर हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, उस सभी चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सो आई अगेन वेलकम यू ऑल ऑफ यू टू दिस सेशन and I'll speak sometimes in Hindi and English both, just to be covering more population of ours. So welcome. So, childhood poisoning are of two types. वो दो प्रकार की हैं। Commonly accidental poisoning होती है और एक homicidal poisoning होती है। हम आज accidental childhood poisoning की बात करने वाले हैं। यानी accidental का मतलब है जब बच्चा अपनी इंक्यूजिटिवनेस यानी अपनी जो शरारतें होती है उसके कारण वो चीज को ले लेता है और गलती से ले लेता है, उससे वो अंदाजा नहीं होता है कि वो क्या चीज है। और एक होती है होमिसिडल, जो वो जानबूझ के लेता है, जो कि अलग चीज है जिसके बारे में हम आज नहीं बात करने वाले हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज एक्सीडेंटल चाइल्डहुड पॉइजनिंग। सो सबसे पहली चीज है कि एक्सीडेंटल चाइल्डहुड पॉइजनिंग कब होती है और किस उम्र में होती है। तो सबसे कॉमन उम्र इस चीज के लिए होती है अराउंड 1 to 3 years। 1 से 3 साल में क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सबसे पहली बात है 1 साल के अंदर बच्चा थोड़ा हमारा चलने लगता है, वो चीजों को देखने लगता है और वो जगह जगह जाके उन चीजों के साथ खेलता है, उनको देखता है और उनको एंजॉय करता है। और उनका नेचर ऐसा होता है कि दे आर रियली उनको हर एक चीज समझनी होती है। दे आर वेरी इंक्यूजिटिव कि मुझे क्या है, क्यों है, वो जरूर उनको जानना होता है। सो दे आर ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द थिंग्स व्हिच आर वेरी जो बहुत कलरफुल होती हैं या अलग दिखती हैं या इस प्रकार की चीजें बहुत ही कॉमनली उनको अट्रैक्ट करती हैं। तो कॉमनली ये बॉयज को भी होता है, गर्ल्स को भी होता है, पर अगर हम ऐसे देखें तो बॉयज ज्यादा शरारती होते हैं। और हमारा भी जो एक्सपीरियंस है और जो बुक्स भी कहती है बॉयज कॉमनली हैव सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स मोर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा और भी शरारती होते हैं इस चीज के अंदर। तो पहली चीज है कि क्या चाइल्डहुड पॉइजनिंग किन किन चीजों से होती है, और अगर होती है तो हमें पता होना चाहिए कि रूरल एरिया यानी हम जब सबर्ब्स के अंदर या रूरल एरिया में रहते हैं वहाँ की पॉइजनिंग कम्प्लीटली डिफरेंट है, और हम अर्बन एरिया में रहते हैं तो वहाँ की पॉइजनिंग कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो अर्बन एरिया की पॉइजनिंग जो कि नॉर्मली शहरों के अंदर किस प्रकार की पॉइजनिंग होती है, तो शहरों के अंदर जो पॉइजनिंग होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जो मैंने चीजें रखी हैं, एक तो कॉमनली होती है जिसे हम कहते हैं ये क्या है, मॉस्किटो रिपेलेंस। सो फर्स्ट इज मॉस्किटो रिपेलेंस से बहुत कॉमनली होती है। किस प्रकार से होती है मैं जरूर बात करूंगा, अभी सिर्फ हम बता रहे हैं कि किस किस से होती है। टॉयलेट क्लीनर से होती है। राइट। अदर थिंग जो कि बहुत कॉमन है, जो कि गांव में भी हो सकती है, शहर में भी हो सकती है, जो कि मेडिसिन होती हैं उनके थ्रू हो सकती है। एंड कई बार बहुत कॉमनली यूज चीजें, पेंसिल उन्होंने ले ली, कभी मैच बॉक्स से मस्ती करते हुए उनके साथ हो गया, या कभी समटाइम्स दे में प्ले विद डिओड्रेंट्स, इन सब के साथ अलग अलग चीजों से होती है। तो ये जो पॉइजनिंग्स हैं, अदर प्रकार की जो पॉइजनिंग है जो स्पेशली रूरल एरिया में या फार्मिंग जिनके है कॉमनली वहां पे होती है, जिसे हम कहते हैं कि इंसेक्टिसाइड्स, जो कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, वो कॉमनली बहुत जल्दी बच्चों में हो जाती है। और होने का एक और कारण है कि बच्चों की चमड़ी जो होती है वो बहुत ही डिफरेंट होती है बड़ों से। तो इनकी जो चमड़ी है उनको एक्सपोजर अगर हवा में भी कोई चीज हो, जैसे मान लीजिए किसी ने दवाई का छिड़काव किया है, तो इनकी चमड़ी वो चीज को एब्जॉर्ब करके, और हो सकता है उनको 12 से 24 घंटे में सिम्टम आने लगे। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के खिले होते हैं फूल, तो उनके अंदर भी वो लोग खा लेते हैं और इससे भी तकलीफ होती है। कई बार हम गांव के अंदर डिफरेंट टाइप की दवाइयां देते हैं, जिससे हम कहते हैं कि भाई ओपियम, बच्चे को डायरिया हो रहा है तो वो लोग उनको एक काली प्रकार की दवाई होती है वो जुबान पे चढ़ाते रहते हैं, पर उससे कई बार ओपियम पॉइजनिंग हो जाती है। अगर आपने सुना हो जो अफीम के डोडे होते हैं उसको कई बार गाँव में घिस के और खिलाते रहते हैं, वो हो सकती है। सो एक हम बात कर रहे हैं रूरल एरिया की, एक अर्बन एरिया की। तो अर्बन एरिया की सबसे कॉमनली अब मैं एग्जांपल्स दूंगा। तो सबसे पहले मम्मी आराम से किचन में अपना काम कर रहे हैं, बच्चा बाहर है 2 साल का, वो आराम से खेल रहा है अपने टॉयज के साथ, अचानक से खांसी करने लगता है बच्चा, मम्मी जाके पहुंचती है और देखती है क्या हुआ, तो देखती है कि ये इस प्रकार का जो रेपेलेंट है वो बाहर पड़ा है और उसके साथ बेबी खेल रहा है और उसे बेबी ने खोल दिया है। एंड इट इज वेरी कॉमनली वो खुल जाता है,
वो बहुत ज्यादा टाइट नहीं होता है, तो कई बार वो बच्चे अगर उसको बहुत ज्यादा कोशिश करें तो भी वो खुल जाता है, कई बार लूज होता है तो भी वो लिड खुल जाती है। सो दैट इज वेरी कॉमन। सो वो लोग इसको पी लेते हैं और फिर पता चलता है मम्मी को कि अच्छा उसने कफ कर लिया। तो पहली चीज है कि इस प्रकार के रेपेलेंट से भी बच्चों को, ये एपिसोड मैंने आपको बताया। दूसरा है कि एक हमारी बुखार की सिरप है जो सभी घर के अंदर होती है, और बच्चे के अंदर वो आजकल कलरफुल भी आती हैं, कलर्ड फ्लेवर्स में आती हैं, डिफरेंट डिफरेंट होती है। सो बच्चे क्या करते हैं कि कई बार उसे ओपनली पड़ी होती है और उनको हमने कभी कहा होता है कि आ, वो बच्चे देखो ये हम दवाई ले रहे हैं, ये अच्छी शुगर वाली है, ये बहुत ही मीठी होती है, ये बिल्कुल एक चॉकलेट जैसी है। तो कई बार वो पड़ी होती है ऐसे ही टेबल के ऊपर पड़ी है दवाई, और बच्चा देखता है कि खुली पड़ी है तो वहां पे जाता है, देखता है उसे, कई बार खोल लेता है और उसे पी भी लेता है। तो हमें अंदाजा भी नहीं रहता है कि बच्चा वो दवाई पी चुका है, और कई बार ये दवाइयां बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं। तो मान लीजिए उनका कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है कि इतना हाई हो कि 10 किलो के बच्चे के लिए अगर वो कई बार 10 से 20 ml भी पी जाए तो उसके लिए बहुत ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। सो इस प्रकार की दवाइयां होती है। कई बार जो हमारे मम्मी पापा हैं, दादा दादी हैं, उनकी भी दवाइयां होती हैं। जस्ट एक एग्जाम्पल है, इस प्रकार की दवाई है। तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं इसके अंदर कितने सुंदर से ग्रीन ग्रैन्यूल्स हैं, और ये ग्रीन ग्रैन्यूल्स कोई भी बच्चा देखता है तो बोलता है ये क्या है, एंड ये बहुत ही इजीली खुल भी जाते हैं। सो इफ वी सी, तो ये खुल जाएंगे, ये खुल जाते हैं। उसको फिर आप हाथ में लेके देखेंगे तो दे लुक वेरी ब्यूटीफुल। सो इस प्रकार से क्या करते हैं बच्चे, इस चीज को वो लोग मुंह में रख लेते हैं, कई बार खा जाते हैं, कई बार नहीं खाते हैं, या कई बार इसका जो बाहर वाला जो कैप है उसके कारण उनको अटक जाता है और वो तकलीफ में आ जाते हैं। तो इस प्रकार की चीजें भी बहुत कॉमनली देखने मिलती हैं। चौथी चीज जो एग्जाम्पल है, कई बार बच्चों को हम 7-8 महीने के बच्चों को टॉयज दिलाते हैं, और वो टॉयज में आपने अक्सर देखा होगी कि बटन बैटरीज होती हैं। तो बच्चे जब खेलते हैं उसको ऐसे पटकते हैं ऐसे, तो वो जो बैटरी है कई बार वो अचानक से बाहर आ जाती है। जो छोटी सी राउंड बटन बैटरी होती है, और वो बटन बैटरी को बच्चा देखता है ये क्या है, बहुत ही बढ़िया है, तो उसको भी मुंह में वो हेल्प कर लेता है। तो इन सब चीजों के अंदर ये मोस्टली अननोटिस्ड होती हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, बच्चे को हमें पता है वो खेल रहा है, मस्ती कर रहा है, और हम अपने काम के अंदर व्यस्त हैं, और उसके बाद पता चलता है कि अचानक से, मान लीजिए कई बार ये भी नहीं पता चलता है हुआ क्या बच्चे को। ऐसी चीजें अक्सर क्या होता है, बच्चा अचानक से सुस्त हो जाता है, बच्चा अचानक से खांसी करने लगता है, बच्चा अचानक से मुंह में से झाग निकालने लगता है, या बच्चे का बिहेवियर ही चेंज हो जाता है, बच्चे को बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है। तो एकदम से आपको लगता है हमारे बच्चे को क्या हो गया। और एक बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल जो कि मैं आपको बताने चाह रहा हूँ, उसके मम्मी पापा बच्चे के दोनों वर्किंग थे, और बच्चा अपनी दादी के पास रहता था, और मम्मी पापा सुबह गए थे, शाम को आया तो देखा कि आज बच्ची बहुत ज्यादा सो रही है, एंड जब वो उठी तो बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ी है और उसके होंठ भी थोड़े नीले लग रहे हैं। तो पेरेंट्स को लगा है क्या हो गया अचानक से। वो 2-3 डॉक्टर्स के पास गए, और तब डॉक्टर्स को भी बहुत मुश्किल हुई समझने में कि अचानक से ऐसे बच्ची को क्या हुआ, क्योंकि वो बिल्कुल ही एक नॉर्मल बच्ची थी, अंदाजन 3 साल की थी। और उसके बाद वो हमारे हॉस्पिटल में पहुंचती है, और उसके बाद हमें भी अंदाजा लगाने में 30 से 45 मिनट्स लग जाते हैं हुआ क्या है। फिर जब हम बहुत इंक्वायरी करते हैं डिटेल में और पता करते हैं तो पूछते हैं, तो दादी माँ की घर के ऊपर स्किन की कुछ दवाइयां चल रही थी, और उस बच्ची ने वो 3 टैबलेट स्किन की दवाई की खा ली थी। सो नोबडी, कुछ रियलाइजेशन भी नहीं हुआ कि क्या हुआ। सो जब भी कोई चीज अचानक हो जिसके अंदर बच्चा बिल्कुल ठीक है, और अचानक से कोई चीज एब्सोल्युटली चेंज हो गई है बिल्कुल, तो हमें इस प्रकार की, जिसे हम कहते हैं पॉइजनिंग, सोचनी पड़ती है। और दूसरी चीजें हैं जो हमें सोचनी पड़ती है कि कहीं कुछ काट तो नहीं गया। आज हम कोई काटने की बात नहीं कर रहे हैं, पर हम ये पॉइजनिंग की जरूर बात कर रहे हैं, और ये एक्सीडेंटल चाइल्डहुड पॉइजनिंग, इसीलिए हमें सोचना पड़ता है, और ये बहुत ही रेलेवेंट हो जाता है। तो एक चीज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए कि घर में हमारे ये जो भी सामान है, जैसे कि हमने अभी बात करी थी टॉयलेट क्लीनर की, तो एक एग्जाम्पल है कि 4 साल का बच्चा था और दूसरा उसका छोटा बच्चा था, भाई था 6 महीने का। तो वो दोनों खेल रहे थे, फिर अचानक से उसको 4 साल के बच्चे को एक बॉटल दिखी और उसे लगा कि मेरे भाई को थोड़ा सा प्यास लगी है। तो वो बॉटल उठा के लाता है और उसे खोल के और जस्ट उसको पोर करने लगता है। थोड़ी देर बाद मम्मी आती है और देखती है कि छोटे बच्चे के मुंह में से इतने झाग निकल रहे हैं और बहुत ज्यादा रो रहा है। तो उससे क्या हुआ था, ये सब एल्कली होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एल्कली होते हैं या एसिड होते हैं। सो अल्कली और एसिड जैसे ही किसी के शरीर पे गिरता है वो एक बर्न्स कर देता है। तो इस प्रकार की चीजें भी बहुत कॉमन है। तो कोई भी चीज अगर आपने ऐसे रखी है तो बहुत ही तकलीफदायक हो सकती है। एक बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल जिसे हम कहते हैं गांव के अंदर या इवन स्लम एरिया में हम देखते हैं, तो इस प्रकार की बॉटल कोको कोला की और ऐसी कुछ बोतल्स होती हैं,
और उसमें बहुत सारी चीजें हम स्टोव में रखने के लिए एक केरोसिन होता है या कभी कभार कुछ ऑयल्स होते हैं, वो उसको इस बॉटल के अंदर स्टोर कर देते हैं। सो बच्चा आता है दौड़ता हुआ भागता हुआ और एकदम देखता है अरे ये बॉटल में इतना अच्छा सुंदर क्या रखा हुआ है, सो अचानक से उसे पी लेता है। सो अगर हम इस कंट्री में कॉमनेस्ट पॉइजनिंग देखें इंडिया के अंदर तो वो केरोसिन पॉइजनिंग होती थी। सो केरोसिन पॉइजनिंग एक बहुत ही कॉमन चीज है। सो अदर थिंग दैट इज वेरी one thing which is very relevant is what I have told you is okay, there is an all out poisoning, then there is a toilet cleaner poisoning. Other things sometimes may be very non relevant, but the baby might be having lead के pencils को खाता रहता है and then parents come to know कि उसको बहुत ज्यादा पेट दर्द हो रहा है, उल्टियां हो रही हैं, so sometimes even lead poisoning can happen. मैच स्टिक देखने में लगता है कि कोई इशू नहीं होगा, बट समटाइम्स इवन मैच स्टिक्स कैन हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। सो देयर आर सम रेलेवेंट थिंग्स व्हिच हैव टू बी सीन एंड अंडरस्टूड बिफोर वी टेल। सो आई हैव गिवन यू मल्टीपल सिनेरियोस जहां पे हाउ यू कैन सी दैट द बेबी वाज एब्सोल्युटली फाइन एंड बिकॉज़ he looks at the environment in a completely different manner and all these things are very new to him. So then they keep on looking at the nature and try to explore it and they may have ingested. So that is one thing how you can avoid that I'll tell you. Now other things which I am coming to you is very important is the drugs. So how do you give drugs and how they can be very relevant. Just for an example 3 to 6 months हम usually paracetamol drops देते हैं and उसके बाद हम जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको we usually after 1 year start them on syrup or even sometimes after 6 months. So जो ड्रॉप्स हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन इज अराउंड 100 मिलीग्राम और 150 मिलीग्राम पर एमएल एंड जो सिरप्स हैं वो कम कॉन्सेंट्रेटेड होती है, यानी 5 ml में उनमें कंप्लीटली ओनली दे विल हैव 120 mg. So you can see the difference, 1 ml 150 mg and the other one has 5 ml 120 mg. Suppose in case now you call some doctor and tell my baby is having fever and you have both of them and we tell you okay you give them 5 ml of paracetamol. Now you take the drops and give the 5 ml to the child. Okay? And now you realize, oh, I have given the wrong. I have to give the syrup and I have given the drug which was not needed. I have given the drops. So you have given very highly concentrated drug. That means you have given 750 mg and we only wanted to give 150 mg. So you can see 5 times the dose. Does that make a difference? Yes. If you give such kind of drops even 2 times in whole 1 day, the baby liver may get affected and it may fail gradually. Understand? So that is the difference you can have. So you have to completely understand that the drops and the syrup is completely different. Other things which are available in the home is the tablets sometimes for sleeping, anti-diabetic drugs which are very commonly used in our country, oral drugs, and the problem is a single drug if a baby takes of a diabetes of a 10 kg, the effect may last for 36 to 48 hours. Your baby may be excessively sleepy for next 24 to 48 hours and his sugars may go down very low. So that can be life threatening and if not checked, that may even kill the child. So you can just understand a simple tablet, a small tablet can affect a 10 kg baby leading to the death. So that is the importance of keeping the medicine. Other thing which routinely is used is the parents whose babies have epilepsy. So they have to check every time the concentration, what concentration I am giving. Every time you have to ensure because there are different concentrations which are available. That means 5 ml can have 20 mg, 5 ml can have sometimes 60 mg, and even there are available which says 5 ml has 120 mg. So if you don't take care of that, you may accidentally be poisoning your child by giving such amount of high medicine, or that can be detrimental for a child. That means that can be very devastating for a child. Other thing which is kept in the villages commonly is the organophosphorus. So that is the insecticides. हम बहुत सारी फार्मिंग के अंदर इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं एंड बहुत सारे आजू बाजू में पौधे भी होते हैं जिसके अंदर ऐसे सब्सटेंस होते हैं which even sometimes doctor may not be knowing. So how do you do? Suppose in case we know कि now this has happened, what should we do first? That is the priority कि हमें क्या करना चाहिए, क्या है. तो सबसे पहली चीज तो है कि आपको समझ में आना चाहिए कि मेरे बच्चे को ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है. So अगर हम सोच रहे हैं कि हुआ है तो मैंने ऐसे ही बोला है. The baby will be absolutely fine overnight. He must have slept well. He was playing, and suddenly you find that the baby has started having problems within 30 minutes or within 1 hour. That is one clue. In the surroundings, you see
that the tablets, something is opened like this, bottle is open, he might be having some stink from the mouth, or there might be some smell coming from his body, and there might be some empty things which are lying around, the tablets in his hand. So recently a baby came with a pink lips, and then the parents also came that the Dadi grandma is taking these pink tablets which were for his heart disease for the blood pressure control. So that baby accidentally took 5 tablets because they were almost looking like gems. They were looking very beautiful, and the baby took those, and the baby had to be in intensive care for 2 days. So that is the problem that can happen. So first thing, we have to be very clear when we should think. Now it has happened. First thing what we should do, please do not panic. First of all, if you panic, you will create more problems. First of all, you should do is the things which he has taken, or if you suspect, please keep it with you, because sometimes you may not be able to tell what is the content, what has been taken by my baby. So you should preserve the thing and bring it to the hospital, or for the once you start giving the first aid. So that should be very clear. Any plant or any drugs which was there, you should bring to the hospital so that we can do something. Second thing what we immediately do is sometimes you make the child do vomiting. So every time it does vomiting work, or it should not be done. So please understand that every time vomiting does not work, and does not work. So for a simple example, this is a solution which contains a mosquito repellent. This solution is very volatile. यानी अगर हम उसे लेते हैं तो पीने के बाद उसकी भाप बनके और बहुत जल्दी उड़ जाती है. So this is one solution where if you try to do a vomiting, it may directly go into the lungs, and you may develop pneumonia, very bad pneumonia. And just remember, you cannot every time make vomiting as an answer if the baby has taken something. Suppose baby has taken a battery in the mouth, and now you know that yes, there is a battery, and you try to put your finger inside the mouth and try to remove it. The battery may go inside your airway, or sometimes even food pipe. The battery is bound to go inside because it is very small, and that is a natural trap, and you may cause more harm, and sometimes even they may have a choking, and at the spot they may die. So please remember that every time you cannot put your finger inside the mouth or try to make the child vomit. So there are certain things where vomiting is absolutely not allowed. So what you should do? So what you should do is immediately take your baby to the nearby center. Immediately, as soon as possible, because in poisoning, minutes matter, hours matter. First hour is called as the golden hour management. So if there are certain things which baby has taken, suppose he has taken 10 iron tablets, okay, by mistake. So the iron tablets, if they have taken 10, you reach the hospital in 45 minutes, first hospital. If they do a lavage, means they take out all the content of the baby's stomach outside by giving some fluid and washing it. So the baby has a very less chance of having the problem with the iron which he has taken. If you reach maybe 3 hours, 4 hours, 5 hours later, then it is very difficult. So what I mean to tell is, if you know that your baby has taken some which you don't know whether it is harmful or not, then please don't do vomiting. You are not supposed to make your child vomit, because if you don't know what are the problems with that, you may end up causing more problems. You understand? I hope I am clear that अगर आपको नहीं पता है कि मेरे बच्चे ने कौन सा पॉइजन लिया है या कौन सी दवाई खाई है, और मैं उसको उल्टी कराऊं या मुंह में डाल के कुछ करने की कोशिश करूं या उसको नमक का पानी पिलाऊं, तो उससे और ज्यादा नुकसान हो सकता है rather than फायदा होना. So that should be very, very clear. So what we can do as a parents, because childhood poisoning sometimes can cause death, it can be devastating. कई बार हम हंसते हैं, अरे वाह इसने ऑल आउट पी लिया, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, तो करता है मस्ती. But sometimes you may end up having very, very bad day. So one thing which I just wanted to show you is that how you can prevent some of the things in childhood poisoning. So this is one of the things which so this is a cupboard where usually the will be stored. So the first thing which I wanted to point out is the medicines. So medicines should be kept in a container which is very seal proof, and it should have a system where it cannot be easily opened. So there are now boxes which are available where you can keep the medicines, and maybe you can even keep a small lock, because you know if your baby ingests it, it can be devastating. And such kind of things are always kept in the cupboard higher up. So they should be kept very high up, and they should be approximately double the height of the baby.
So always remember कि जो बच्चे का height है उससे 2 गुना height के ऊपर सामान रखिए ताकि he cannot reach. So that is one thing which is very very important, and ensure what kind of medicines are there in the home, and you just have a list of the medicine that okay 1 2 3 4 5 6 I have kept this, and if you feel that, okay something is missing or there is some problem in your baby and some medicines are missing, you know that what is happening. Other thing which is very very important is what we have told, that please do not tell the medicines as chocolates, dollies, lollipops. They should never be told that they are certain syrups which are very very sugarated and they might be very good to taste, and one should not tell. Sometimes it happens in iron, sometimes it happen in paracetamol that baby take a lot of such amount of drug and come to us in emergency, and if they land come up late they might be very very difficult to manage. So that is one thing. Use child locks. So we have already told that keep the medicines in a child lock. Never keep such kind of things in Coca-Cola bottle. So you don't store anything which looks very beautiful but you know that it is not good and you store in a bottle. Never exchange the bottles. So don't exchange the bottles. So if something has come into this, you cannot put this medicine into this. So that is very commonly done. Oh, ये थोड़ा खराब हो गया है, चिपचिपा हो गया है. You will just throw it and transfer the medicine into the another thing. So that cannot be done. Other things which are very very relevant which we have written here is the medicine labels. हमें तो पता ही है, ये तो यही concentration में आती है. We always feel okay, we know everything. Before giving drug every time to your baby, please ensure that you are reading the label. That means 1 ml में कितना है, 5 ml में कितना है, we should know. And we cannot tell कि नहीं हमें इतना समझ में नहीं आता है, this is the work of doctor or pharmacist. No. If we are giving any medicine, we have to be very very sure कि हमें कैसे देनी है, क्या करना है. That is very very relevant. So please remember that. Other things which are commonly done is the some of the seeds which are like opium, which is available sometimes, is given in the villages for diarrhea and all those things. That can be very very bad, and even child can have very big tummy. The child may start vomiting, and sometimes they may die because of such kind of things. So no opium should be given like this. So that is one thing which we want to highlight. Another thing as a parents what you can do is, so keep the medicine safe. Never keep the toilet cleaners in the, once you wash the toilet, please remove the toilet cleaners and keep it at a safe place. Do not use deodorants or maybe nail polish remover in front of them, because then they start using once they go out and they might even poison themselves. And if you want to have other things which I want to tell you is, if you find your baby in suddenly in something which was not there, please remember that you have to immediately take your baby to the nearest hospital and remember the surrounding area what has happened, so that we can identify what has happened. So if you have any questions you can ask. So one of the question is, what is the most common sign of poisoning? How would parents figure out that the baby has been poisoned? So as I told you, आप जब सुबह उठ के देखेंगे बच्चे को, बच्चा खेल रहा होगा, दौड़ रहा होगा, ना उसे कोई सर्दी होगी, baby may not be having fever, nothing, and now you are suddenly coming up, baby is sleeping, excessively sleeping, you feel he has never slept like this, baby is excessively coughing, baby has started developing some breathing problems, and you feel that something has happened which was not there previously, and the environment something you find very dicey. That means you find if the bottle is opened or some drugs are missing, then that is the time one should think and immediately take it to the doctor that my child is not well and he has just not been well for 1 hour, 2 hours, something might have happened. So that is one thing as a parent you must realize, and do not keep these babies at home for more than an hour, because sometimes you might have really difficulty after something has happened. Okay. So if the baby is far away from a medical center, what should be done initially? So as I have told, please do not panic. First, the poison or the drugs which are available will not kill the child, but the problem is हमेशा हमें एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन, यानी बच्चे सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, बच्चे के हाथ पांव गर्म है कि नहीं है, और बच्चे की नब्ज आ रही है कि नहीं आ रही है. जितने भी ये सारे पॉइजन्स की मैंने बात करी, उनका कोई एंटीडोट नहीं होता है. बहुत ही कम दवाइयों का हम ऐसा इलाज कर सकते हैं कि उस दवाई को गायब कर दें, पर अगर उसका नब्ज अच्छा चल रहा है, उसकी सांस अच्छी चल रही है, उसकी बीपी अच्छा चल रहा है, तो दवाइयों का असर कई बार अपने आप ही धीरे धीरे चले जाता है.
सो रिमेम्बर कि आप कुछ नुकसान ना करें, बस ये समझ लें कि आप उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाएं, और अगर उसका सांस नहीं चल रहा है तो शायद मुंह से सांस देना पड़े, उसका दिल नहीं चल रहा है तो शायद दिल पे मसाज करनी पड़े और नजदीकी डॉक्टर के पास ले जाना पड़े। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है करने के लिए। So other question is, can overdose of cough syrup also cause poisoning? So this is a very relevant question. कफ सिरप के अंदर प्लीज रिमेम्बर, इंडिया के अंदर बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आते हैं, अंदाजन व्हाट आई नो एटलीस्ट देयर आर 25 से ज्यादा भी कॉम्बिनेशंस। तो प्रॉब्लम क्या है उसमें, उसके अंदर अलग अलग प्रकार की दवाइयां होती है, जैसे पैरासिटामोल, उसके अंदर क्लोरफेनरामिन, उसमें डेक्स्ट्रोमेथासोन, और ये सब क्या है, ये कॉम्बिनेशन कंपनी ने फिक्स करके दिए हैं। अब मान लीजिए बच्चे का वजन 7 किलो है, मान लीजिए बच्चे का वजन 10 किलो है, अगर हम उसको डोज बराबर एडजस्ट भी करें तो कुछ दवाइयां कम कुछ दवाइयां ज्यादा जा सकती हैं, और इसके ऊपर अगर आप बुखार की दवाई भी पिला रहे हैं, दूसरी दवाइयां भी पिला रहे हैं, तो इनसे नुकसान हो सकता है। तो कफ सिरप रियली इज डेंजरस। समटाइम्स बच्चे को खांसी होती है, हम पिला देते हैं, फिर से खांसी होती है, बच्चा खुद पी लेता है। सो प्लीज रिमेम्बर, कफ सिरप के अंदर सुलाने की दवाई, कफ सिरप के अंदर ऐसी दवाइयां भी होती हैं जो बेहोशी कर सकती हैं, और कफ सिरप के अंदर लिवर फेल करने वाली दवाइयां भी होती है। तो बिना पूछे उसको ओवरडोज में ना दें, या समटाइम्स यू में फील कि ये नॉर्मल डोज है, गूगल पे देख के वो डोज डिसाइड ना करें, नहीं तो बच्चे को खासी तकलीफ हो सकती है। लास्ट टाइम डॉक्टर ने लिखी थी यही डोज में दे देते हूँ, वैसे भी नहीं चलेगा। एवरी टाइम प्लीज कंसल्ट द डॉक्टर एंड देन ओनली टेक एनी कफ मेडिसिन। So anything you want to ask, I'll be happy to answer. Otherwise, I am really thankful for you, all of you, to listening. And you can again listen to the next web telecast, which will be there from the Zydus Hospital. Thank you.